Assalamualaikum. Welcome to Vivid. Today we are going to do chapter 1 of quadratic equations and we will be doing exercise 1.2 question number 2 from this chapter. Question number 2 is solve by factorization. As we have already studied, we can solve quadratic equations in two ways, by factorization and by completing square. The first one is by factorization. We have done its examples. We will be doing and we will be solving these questions by factorization. So let's move on. First question is x square minus x minus 20 is equal to 0. So you can see that x square minus x minus 20 is equal to 0 hai. So first we have to multiply from the standard quadratic equation. We have to multiply a by c. If we assume that this is the standard quadratic equation, so we can say that we have a is equal to 1 over here. We have a is equal to 1 and c is equal to 20. Minus 20, yes, because don't forget the signs, it is minus 20. So a is equal to 1 and c is equal to minus 20. We are going to multiply both of them. What do we get? We get minus 20. So we need factors of minus 20. We need factors of 20. So that if we add or subtract both of the factors, we get minus 1 because we have 1 with this x or minus 1 with this x. So we need the factors of 20. We know that 5 times 4 is 20. We can use, and if we subtract 4 from 5, we get 1. So we are going to use these two factors. अब इन दो factors को use करके हम किस तरह से minus x की जगह पे हम लिखेंगे minus 5x plus 4x, because हमने उन दोनों numbers को minus करना है ताकि हमारे पास 1 आए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 20 है. तो इफ वी मल्टीप्लाई 5 and 4 we get 20, and if we subtract 4 from 5 we get 1. Now we have to match the signs as well. As x has minus with it, we need a greater number with minus. So we wrote minus 5x and plus 4x. बड़े नंबर के साथ माइनस साइन होगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा प्लस या माइनस करने से. यहाँ इन दोनों को माइनस करके हमारे पास माइनस एक्स आएगा. Similarly, we need to match signs with minus 20 as well. If we multiply 5 times 4, 20, but we have to multiply the signs as well. If we multiply plus and minus, we get minus. So this is also correct that we have minus 20. So till then, this was the equation, this was the factorization which we have done. Let's move on now. You have to take common. Make pairs. X square minus 5x is the first pair and make the second pair 4x minus 20. अब first pair में से अगर क्या common आ रहा है, you have to take the least number, the least variable. A least variable is x. So we are going to take it common and no other number is coming in both of these terms. So we are going to take x common. In the first term we are left with x only, and in the second term we are left with 5 and sign will remain the same. Sign will be minus. From the other two terms we can take 4 common. 4 is because 4 is the least number which we can take common. So let's take it common. In the brackets we are left with x minus 5 because 4 times 5 is 20. After this you can see that this is the first term, x minus 5 into x and 4 into x minus 5. This is the second term. So from these two terms we can say that we have x minus 5 in common. Both of them have x minus 5, so we are going to take common x minus 5 and we are left with x plus 4 over here.
This is x plus 4. So if this is x minus 5 is equal to 0, these both terms are equal to 0. Write them individually. X minus 5 is equal to 0 अलग लिखते हैं, x minus 5 is equal to 0 अलग. If x minus 4 x plus 4 is equal to 0, वहाँ पे हमारे पास x is equal to plus 4 minus 4 आ जाएगा, और x minus 5 is equal to 0 से हमारे पास आ जाएगा x is equal to 5, क्योंकि साइन if you move one number from have to change its sign. So माइनस फाइव जो था वो राइट हैंड साइड पे जाके प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस 4 जो है वो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस 4 हो जाएगा. सो वी हैव टू राइट माइनस 4 विद इट. आवर सोल्यूशन सेट इज 5 and 4 over here in this part. I hope this is clear to you. We can move on to the second question now. Second question is 3y square is equal to y bracket y minus 5. So first step is to write in the standard form. What is the standard form of quadratic equation? Ax square plus bx plus c is equal to 0. So by writing in the standard form, what do we get? First of all, solve the brackets. Y into y minus 5. सॉल्व किस तरह से करेंगे? y को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर जितनी दोनों टर्म्स हैं दोनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके, y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर और माइनस 5y. 3y स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे है, वी विल कीप इट एज इट इज. When we multiply this y with y, we get y square, and with 5 it will give us minus 5y, because we have to multiply the sign as well. So it will give us y square minus 5y. अब y square minus 5y जो यहाँ पे right hand side पे, we have to take it, bring it to the left hand side. 3y square, अब right hand side की terms के जो signs हैं वो change हो जाएंगे जब वो left hand side की तरफ आएंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे आया है तो ये y square minus it is converted into minus y square, and plus 5y is converted into minus 5y is converted into plus 5y. We have to solve the like terms. Here we have only 3y square and y square. These are the only like terms. So first of all, we have to solve them. 3 minus 1, the sign says that we have to subtract both numbers, the constants with the variables. We have 3 and 1 with the variables. First one is 3 and the second one is 1. So we are going to subtract plus minus minus. 3 minus 1 2 होता है 2y square, and plus 5y will be as it is equal to 0. Now we can see that both terms are having y. So minimum can be taken out as common. So let's take common y outside, and in brackets we are left with 2y plus 5 is equal to 0. अब y is equal to 0 है, क्योंकि this y can be equal to 0, and because these are two terms and both of them can be written is equal to 0. y is equal to 0 and the other one is 2y plus 5 is equal to 0. अब दूसरी term में we have to take this 5 on the right hand side. We just need y on the left hand side. So we are going to take this 5 on the right hand side, then it is converted into minus 5. अब plus 5 था तो right hand side पे जाके वो minus 5 हो गया. We need only y and we have this 2 over here. This is extra. So we are going, if here it is multiplying, on the other hand side it is going to be divided. So यहाँ पे multiply हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके हम उसको divide कर देंगे. minus 5 by 2 हो जाएगा y की वैल्यू. So we are left with two values of y, 0 and minus 5 by 2. तो हम कह सकते हैं कि this is the solution set of the given equation. Now here comes the third part of question number 2. It's quite similar. What we are going to do is, first step is to write them in write the given equation in a standard form. Standard form is ax square plus bx plus c is equal to 0. So first of all, you have to here in this given equation we have x squared. ये square term जो है वो हमारे पास right hand side पे है.
17x squared right hand side पे है, तो we have to bring all these terms from the left hand side towards the right hand side. हम उसको ले आते हैं -32x है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू +32x. और इसी तरह से +4 था, तो राइट हैंड साइड पे जाके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू -4x. अब -4x जब हो जाएगा, we can see all these terms on the right hand side, and on the left hand side we are left with 0. हम क्या कर सकते हैं कि they both are equal, तो हम उनको डायरेक्शन किसी भी साइड पे लिख सकते हैं because it is equal to 0. हम 0 को किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं. अब 17x square plus 2x minus 34x, ये कैसे आया 32? अब we are going to solve it by factorization. Factorization का first step क्या था? Writing in the standard form. We have written it in the standard form. Now the second step is to make the factors. How are we going to make the factors? किस number के factors बनाने हैं? We have to multiply this a with c. This is a, 17 is a, and we have to multiply it with c. This is constant. So if multiplying 17 by 4, we get 68. You can see it on the left hand side. Here is a cloud in which we have written 17 multiplied by 4 is equal to 68. तो इसका मतलब है कि अगर हम a और c को multiply करें, हमारे पास 68 आएगा. We have to make the factors of 68 now. अब 68 के factors बनाने के लिए let's start from the table of 2. 2 के टेबल में 68 कहाँ आता है? 2 times 34 is 68. You can use calculator to divide it, or you can use do it mentally. और 3 के टेबल में 68 नहीं आता, so let's move to the 4. अब अपने एक एक टेबल में इसको चेक करना है कि 68 किस टेबल में कहाँ पे आता है. So start from the minimum. 2 से स्टार्ट किया, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता, 17 पे 68. So we got our answer from this. अब इसमें 34 और 2 को माइनस करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 32, जो हमें प्लस या माइनस करके चाहिए. So we are going to write 2x minus 34x, क्योंकि हमें साइंस भी चाहिए. -4 था यहाँ पे, तो हमें मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा. 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -68. और अगर इन दोनों को माइनस करते हैं 34 और 2 को, तो वी विल गेट 32x. और साइन बड़े नंबर का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 34 है, 34 के साथ प्लस साइन आएगा. वी हैव टू राइट प्लस साइन with 34 as we know that we need a sign of bigger number with 32. 32 के साथ प्लस साइन है, तो 34 के साथ भी प्लस साइन आएगा. So we are going to change the sign of 2 over here, क्योंकि हमें माइनस करना है 34 और 2 को, तब हमें हमारे पास 32 आएगा. So we have changed it. It is now, if we take common, x कॉमन आएगा, यहाँ पे रह जाएगा 17 minus 2. और यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं तो we will be left with +2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन -2 ब्रैकेट में आ जाएगा. So 17x minus 2 is equal to x plus 2. These are the two terms equal to 0. अब हम इनको इन दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 के इक्वल अगर लिखेंगे तो we will get 17x minus 2 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. तो हमारे पास क्या टर्म्स रह जाएंगे यहाँ से? x की टर्म x will be equal to -2 by 17, और x plus 2 अगर 0 के इक्वल लिखते हैं तो we will be left with x is equal to -2. So these are the two terms. This is the solution set. Question number 2, fourth part is similar to this one. We have to first multiply a with c. First write in the standard form. Then we have to multiply a with c and make factors. And then after making factors, you have to take common from both terms, and then you will be getting the solution set. This bit over here, how can we do this? First of all, you can this is in the fractional form.
So whenever the question is in the fractional form, you are going to take LCM. So if we take the LCM, what is the LCM of these denominators? X into x plus 1 will be the LCM. X into x plus 1 is equal to 25 by 12. The right side remains the same. And for the numerators, what do? We are going to divide this LCM by the denominators. What is the denominator over here now? The denominator is x. If we divide the LCM by this, we will be left with x plus 1. और जो हमारे पास आंसर आएगा x plus 1, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर के साथ. न्यूमिरेटर में ऑलरेडी वी आर हैविंग x plus 1, so we will write x plus 1 into x plus 1 without solving. अभी हम ब्रैकेट्स में उसको लिख रहे हैं. Then on the in the second term, again you have to divide the LCM with the denominator. डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 1 है. अगर हम x प्लस 1 को l से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ x. तो इस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से. x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर हो गया. इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 तो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या हम कह सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का. a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला इसका पूरा करते हैं. लेट्स सॉल्व इट. If we solve these two brackets will be equal to x plus 1 and x plus 1 will be equal to x square plus 2ab की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 2x because we have b as 1. If we multiply any number by 1 it will be the same. And it is 1 square. 1 का square 1 के equal हो जाएगा और x square. Right hand side remains the same 25 by 12. We will write this as it is. Denominator में भी denominator remains the same x into x plus 1. अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं x स्क्वायर और x स्क्वायर को, दिस विल गिव यू x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. डिनोमिनेटर में x into x plus 1. Let's do it on the board. X square plus 2x plus 1 divided by x into x plus 1 is equal to 25 by 12. Here we know that this is not the standard quadratic form, so we are going to multiply in the cross. 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इट विल बी मल्टीप्लाइड. अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 25 x और x प्लस 1 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. In this procedure we are just converting this equation into standard form first. अब 25x को x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25x स्क्वायर आ जाएगा और 25x 1 से मल्टीप्लाई होकर 25x ही रहेगा. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 12x स्क्वायर
plus 12 twos are 24x और 12 ones are 12. We have to bring like terms together. अब x square और x यहाँ पे right hand side पे है. We have to write all these terms together on the left hand side to solve them. अब 12x square के साथ यहाँ पे we know that minus 25x square यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 24x के साथ अगर हम राइट हैंड साइड से लेकर आते हैं तो ये 25x आएगा. 25x will be equal to, or we can write it minus 12 or plus 12. On the left hand side it will be plus 12 is equal to 0. By solving the like terms, अब 12x square और minus 25x square को अगर solve करें तो it will give us minus 13x square. साइन बड़े नंबर का आएगा. इन दोनों को सॉल्व करें 24x एंड माइनस 25 दीज आर द लाइक टर्म्स. x वाली टर्म्स हैं. इन दोनों को सॉल्व करें तो वी विल बी लेफ्ट विद माइनस 1x और प्लस 12. अब इन दोनों में से वी हैव टू टेक माइनस कॉमन. अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस खत्म हो जाएगा. इट विल बी 13x स्क्वायर प्लस x माइनस कॉमन लेके माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी हैव टू मल्टीप्लाई a इंटू सी फर्स्ट. ए सी किसके इक्वल है, फिर उसके फैक्टर्स बनेंगे. ए सी इज 13 इंटू 12. व्हाट इज 13 इंटू 12? Thirteen into 12 is 156. So this will be the number which we are going to use for factorization. अब 156 को हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे. 156 के फैक्टर्स बनेंगे. 156 के फैक्टर्स किस तरह बनेंगे? 156 is equal to, अब किस किस टेबल में आता है? 156 can be we can solve it mentally or we can use calculators. अब 2 के टेबल में आता है 278. 2 into 78. अब दो ऐसे नंबर्स हमने इसके फैक्टर्स में से निकालने हैं कि हमारे पास 1 आए, क्योंकि वी नीड 1. ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आए. तो यहाँ पे अगर 3 के टेबल में चेक करें, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, वी हैव टू चेक ऑल दीज नंबर्स एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द टू पेयर ऑफ नंबर so that we get 1 if we add or subtract both numbers. So in the table of 3 we can see that 3 के टेबल में नहीं आता. 4 के टेबल में we have to check and then we have to check in every tables. If we get the pair we have to we will write here and do accordingly and find out the solution set. Moving towards the next question, question number 6. This is also similar to the previous one, question number 5, which we have done by first you have to take the LCM of the denominators, then you have to multiply in the cross. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले एलसीएम लें और फिर मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस में एंड यू विल गेट अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने के बाद यू हैव टू मल्टीप्लाई ए इंटू सी और फिर उसके फैक्टर्स बनाने. आई थिंक दिस विल बी ईजी and you can solve them by taking examples. We will do question number 3 tomorrow, and that was all for today. Question number 3 में we will be solving the equations by completing square.